नो, बट ओके, पर हाँ, ये क्वेश्चंस ट्रिकी हैं। या ये ट्रिकी है, तभी मैंने देखा थोड़ा सा ये, यू कैन स्टक इट ओवर देयर। ओके यू, बट यस, इसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। इनिशियली यू टेक सम टाइम टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई थिंक सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। यू हैव टू थिंक एवरी क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। 31st is also challenging. If you attempt it, आई हैवंट ट्राइड इट सर। okay, that is also challenging. Let me try it. Okay, I do not know why it is not moving on from there. It got stuck. Okay, that is now fine. Okay, can we continue with this question? यस। Okay. Okay, this is 31st illustration. The question is, a pump is used to deliver a mass at a certain rate for a given pipe. Okay, there is a pipe over there, and pump is used to deliver a water. It is delivering a water basically at a certain rate in a given pipe. By what amount should be the velocity of the water? By what amount should be the velocity of the water? हाँ। वाटर कट डाउन हो गया क्या क्वेश्चन? वेट मिनट, लेट मी चेक इट आउट। बाय, नहीं सही है। ओके, बाय व्हाट अमाउंट ऑफ द वाटर द वेलोसिटी, ओके, बाय व्हाट अमाउंट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फोर्स ऑन द वाटर and the power of the motor be increased to obtain the n times the water from the same pipe in the same time. Have you understood the question? यस। Okay. वो बोल रहा है कि कितना फोर्स और कितने वेलोसिटी के साथ वाटर को आना चाहिए कि वो मोटर को एनर्जी दे पाए और वो चला पाए, मतलब। यस, वो कितना टाइम बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि एन टाइम वाटर उससे ज्यादा फ्लो हो। ये सारी द पॉइंट, हम्म। जो पहले वॉल्यूम था उससे एन टाइम ज्यादा करना चाहता है। यस, वो आर द पॉइंट। हाँ। ओके, एंड देन वो पूछ रहा है कि उसमें पावर में क्या चेंज होगा, व्हाट इज द फोर्स वी रिक्वायर इट एंड व्हाट इज द वेलोसिटी वी रिक्वायर इट, करेक्ट? दैट इज द क्वेश्चन। अभी क्या चाहता है कि अभी इसकी जो भी मास है, जो भी वॉल्यूम है, इसमें से जो भी वॉल्यूम जा रहा है उसका एन टाइम करना है मुझे। हम्म। तब वो पूछ रहा है कि इसका एन टाइम जो फ्लो हो रहा है उसका एन टाइम्स करना है, जो पहले जा रहा था उसका एन टाइम करना है। ओके, तो बेसिकली वो चाहता है कि कहीं ना कहीं जो चेंज हो रहा है, व्हाट इज चेंज टेकिंग प्लेस, वो एन टाइम हो जाए। यस, मास का जो भी चेंज हो रहा है वो ही वांट टू बी इन द एन टाइम। ओके, इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम, हम्म। अभी मैं बात करता हूँ कि यूनिट टाइम में कितना इसमें से चेंज होगा मास का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। क्योंकि देखो मुझे क्या चाहिए, अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या है, फोर्स चाहिए। यस, मुझे फोर्स, आई कैन राइट इट बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट ओवर देयर। हम्म। यस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है वहां पे। इट शुड बी द, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर? दिस इज एम डी वी बाई डी टी, कैन आई राइट इट करेक्ट? हम्म। somehow I require the rate of the change of the mass, कि किस रेट से चेंज हो रहा है मास। ओके, इफ आई लुक एट केयरफुली, ओके, व्हाट इज मास? अगर लेट्स सपोज इसमें यूनिट टाइम में देखना चाहता हूँ मैं, तो इसमें मास कितना होगा? लेट्स सपोज वाटर की डेंसिटी रो मान लेते हैं कुछ, मास इज नथिंग बट रो इनटू वी।
मीन्स v इज वेलोसिटी राइट नाउ। Yeah. डेंसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, एंड फ्रॉम देयर यू गेट द वॉल्यूम। ओके, रो इनटू v। Okay. व्हाट इज v? v इज, Velocity. नहीं नहीं, नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम है। ओके, हाँ, जो सॉरी। पाइप की वॉल्यूम में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके, तो अभी ये वॉल्यूम क्या होगी? दिस इज द एरिया एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब करेक्ट हाइट बोल सकते हो, या पाइप की हाइट कितनी होगी। अरे द पॉइंट। सिलेंडर, मतलब यस। मैं इसको डिस्टेंस बोलूंगा, क्योंकि पानी कितना तेजी से फ्लो कर रहा है वो डिस्टेंस पे वेरी करेगा। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, एरिया इंटू डी, करेक्ट? या। बिकॉज राइट नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मास विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मतलब कितना मास में चेंज हो रहा है एज द टाइम गोज। अभी मैं क्या करूंगा, इसको आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट। ओके, डी की फॉर्म में लिखता हूँ, डिफरेंशियल फॉर्म में। कैन आई राइट लाइक दैट? क्योंकि अभी क्या होगा, एरिया कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, इट इज गोइंग टू चेंज द डी ओनली। ओके, डी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि डी डी लिखूंगा तो कंफ्यूजिंग लगेगा। लेट मी राइट इट एक्स। ओके, इसको मैं एक्स लिख देता हूँ। डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी, कैन आई राइट इट? dx by dt is nothing but velocity constant. या। Okay, that is the rate of change of mass, correct? हाँ। Okay, this is the first equation, and he want to increase to obtain the n times the water. वाटर कितना निकलना चाहिए? n टाइम निकलना चाहिए, yes. तो रेट ऑफ चेंज he want to be the n time. या। Okay, what is the rate of the change? It is going to be, I'm book is writing with the dash. Okay, change with the, okay, then what I should do is rho a v dash, can I write it for the second equation? The या। change he wanted, okay, the change मैंने simple change लिखा है, and he want to be the change to be n time, correct? उसको n time चाहिए, जो previous है उसका n time चाहिए। तो can I write it like this? Okay, he want to be the n time of the change of the previous, correct? यस। And then I'm going to write this is nothing but rho AV. Rho and A are going to be the same, and it simply come out to be rho A. The new velocity, it should become, it should become the n time the previous velocity. Are you getting the point? तभी पॉसिबल है, क्योंकि नहीं तो वो n टाइम मास में चेंज होगा नहीं। It means the new velocity come out to be, that is n time the previous velocity. Any doubt in it? वो velocity पूछ रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन। कैन आई डिस्कस अगेन? क्या बोला मैंने? That's really confusing. यस, ओके, वेट अ मिनट। Have you understood till now? Because we right to find out the change in the mass with respect to the time. मास में चेंज कितना हो रहा है, करेक्ट? Yes. ओके, नाउ बिकॉज द रेट में मास में कितना चेंज हो रहा है, इट इज नथिंग बट रो ए वी। व्हाट इज द वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द डेंसिटी, Yes. करेक्ट? ओके, नाउ in the as per the question he want to increase the water to be the end time, मतलब रेट ऑफ फ्लो जो पहले था उसका एंड टाइम करना चाहता है।
तो अभी मैं बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज है बेसिकली, या सिंपली मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है। वो चाहता है कि एन टाइम हो जाए प्रीवियस का, करेक्ट? यस। ओके। एंड हाँ एंड, ओके ओके, एंड टाइम्स प्रीवियस का या। यस, ओके। एंड इफ आई पुट द वैल्यूज ऑफ इट, इसमें ये वैल्यूज पुट इन कर देता हूँ। इट्स सिंपली बिकॉज दीज आर द कांस्टेंट ओनली। हाँ तो ओके। वेलोसिटी में एन टाइम इंक्रीज आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। गेट द पॉइंट? हाँ वेलोसिटी में अगर एन टाइम इंक्रीज आएगा तो प्रीवियस वेलोसिटी से ये एन टाइम हो जानी चाहिए, न्यू वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, इट शुड बिकम द एन टाइम। गॉट इट? यस। ओके, दैट इज द फर्स्ट। एंड देन वी हैव द फोर्स। फोर्स पूछ रहा है, फोर्स इज नथिंग बट what is the form we have written is v into dm by dt, that we already know that value। ये तो पुराने के लिए लिखेंगे। what is the for the new, for the new is it come out to be v dm dash by dt, and again I am going to write it like this. This is for both of the cases. Yes, velocity is also dash for the force required for the increase, कि वो n time increase हो जाए। The n dash is nothing but n of the previous, and this is also rho a n v. Any doubt? नो। Okay, that is the new velocity. That is the again the new velocity in it, and it हाँ। simply come out to be n square. Okay, that is the point here that they want to mention here. It become the previous से कितना हो जाएगा, it become n time, n square time, sorry। एन Okay, स्क्वायर टाइम्स, हाँ। yes, n square time। अगर इसका सिंपली देखोगे, it simply come out to be, if I put the values over there, if it come out to be this much, correct? हाँ। And this is the old one, and the new one is nothing but n square time the previous one। फोर्स में इतना इंक्रीज होगा। गॉट इट? एनी डाउट? That is the force, change in the force. Similarly, you can find out the power. Power is nothing but force into velocity, and similarly for a new power, p dash come out to be the force new and the velocity new, uh, and the force is nothing but it is the previous n square times the new one into the velocity is nv. It come out to be n cube, correct? The power, न्यू पावर इज कम आउट टू बी, प्रीवियस का एन स्क्वेयर आ जाएगी, करेक्ट? द फोर्स इज एन स्क्वेयर, पावर इज एन क्यूब, ओके, द एंड वेलोसिटी इज एन ओनली। कि इसमें इतना चेंज करने के लिए सिस्टम को ये चेंजेस करना पड़ेगा कि उसी पाइप से, सेम पाइप से आपको वाटर अगर एन टाइम करना है, ओके। ओके। वेलोसिटी इज, he have to be the n time, and the force he had to do the n square time, and the power he had to do एन with the क्यूब टाइम, n cube ओके। time, okay।